after that, I got the opportunity to work with Godrej, and so I took it as owing to my financial conditions, I would be in the trap forever. कि Yes, जब वो 13 साल के थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तब उन्होंने वो डेलिबरेटली पेप्सी में किया था, कोका कोला में किया था, इसलिए क्योंकि उन्हें वो कैन बहुत पसंद आती थी. वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट ऑन योर like schooling times, and how did you learn in that age, particularly as you mentioned that you were atmanirbhar since that time of your schooling? yeah, definitely. So, at in school time, like our financial condition was not good, and when I was very young age, and I was youngest in the family also, and I मुझे पता चला कि अभी सब बातें ठीक से नहीं चल रही यहाँ पे घर में, प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, तो पता लग जाता है, तो घर वाले बोलते नहीं है लेकिन हमें पता चल जाता है इससे. सो आई यूज टू कवर अप माई एक्सपेंसेस एज फार एज आई कुड गो. सो आई यूज टू सेल मेनी थिंग्स एट द स्कूल टाइम, फ्रॉम द स्कूल टाइम, कि बच्चों को कुछ बेचना है, या फिर फेस्टिवल का सीजन है, वहां पे कुछ बेचना है, कुछ बेच सकते हो. सो नागपंचमी थी ना अपनी, नागपंचमी, यस तो यस. उस टाइम पे पोस्टर लगते हैं वॉल पे, तो वो भी मैंने बेचे सड़क पे खड़े रह के. सो वहां से मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारा कि कैसे हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है. फिर 10th की जो छुट्टी थी वहां पे भी मैंने काम किया था जब मेरा डिप्लोमा चल रहा था. Also that time I worked in some shops and other things. So that experience, that backbone has given me enough risk appetite, I can say, कि बचपन से मुझे पता था कि क्या वर्क हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो वहां से मैं आई कैन से कि रिस्क एपेटाइट बिल्ड हो गया. सो मेनी पीपल स्टार्ट लाइक रियली बिग बिजनेस एट द फर्स्ट प्लेस. मैंने भी वो गलती की कि कुछ बड़ा करते हैं, लॉन्ड्री का होगा, पूरे देश में फैलेगा, बट मैं खुद की जो है ना भूल गया कि छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटा छोटा स्टार्ट करेगा. एनी एंटरप्रेन्योर यू टेक, फ्रॉम इवन टेक एंटरप्रेन्योर लाइक जुकरबर्ग or Elon Musk, they started really small. Like Elon Musk first made a game or something and he sold it. And Mark Zuckerberg also made some online communication device to connect his home. His father was dentist or something, to connect his home and his office. So we have to start really small projects and small ideas, and you have to gain experience from that and build big from that. So that's how I feel. यस. छोटे छोटे कदम से हम कुछ बड़ा करेंगे. यस. सो ऐसे नहीं सोचना है कि भाई ये धंधा बहुत छोटा है, ये बिजनेस बहुत छोटा है, इसमें इससे क्या ही निकलेगा, तो अभी कुछ पता नहीं सकते कि क्या तुम्हें कस्टमर इंसाइट मिल जाए, व्हाट इंसाइट यू विल गेट एंड हाउ यू कैन बिल्ड अपॉन दैट. यू कैन पिवट योर बिजनेस, यू कैन ऑलवेज पिवट योर बिजनेस. बिजनेस इज लाइक एक्सपेरिमेंट, स्टार्टअप इज लाइक एक्सपेरिमेंट, कि जब हम कभी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वी कैन पिवट फ्रॉम पाथ वी आर वॉकिंग and we can grab that opportunity. So that's how I feel it should work. uh, Rahul, I had one question कि कई most of the times like it's a mandatory thing to have soft skills and good communication abilities, but there are two types. Like in the corporate world we have complete new definition or completely different definition of soft skills, like आपको fluent English बोलते आना चाहिए और ये सब चीजें होती है. लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर बिजनेस करते हो तब आपको कैजुअली सॉफ्ट स्किल्स इंप्लीमेंट करने होते हैं, और वो वहां पर कुछ लैंग्वेज बैरियर या फिर कुछ ऐसे नॉर्म्स नहीं होते कि आपको टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, आपको ये भारी भारी वर्ड्स यूज करने चाहिए. तो Yes, yes. तो उस तरह के सराउंडिंग्स में आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप की? जैसे कि कुछ कई कस्टमर्स होते होंगे जो शायद गुजराती है, तो कुछ अलग भाषा में बात कर रहे होंगे या कुछ अलग बोलते होंगे, तो Yes, yes. आपने वो कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड किया? So सबसे अच्छी कमाई तो हिंदी ही. जब लैंग्वेज का बैरियर आता है तो हिंदी वर्क्स वेल. We had even like customers, users from Northeast also. So they didn't even know Hindi well, or also English didn't well. So we have to communicate in way like 400, 110. We have to set up like this. We have to communicate in that way. So many insight, and as you said, the soft skill levels are different in corporate world and in the when you do business. So it completely and entirely depends on your user base.
So if I say you were in the real estate business or doing something in real estate and you have NRI clients and high net worth clients, so you will have to use a good level of English and a good level of any foreign language to that will be really useful for you. That skill will be really useful to you for communicate taking feedback from the users. But for this startup, I have to communicate to the college students, and as self I am also young, fortunately, and so are my co-founders. And so we have to communicate in that fashion, that what they are thinking, what line they are thinking, what games they are playing. Is they are playing PUBG, but now they are playing Among Us. So we have to think in line that, so how we can communicate with that. And again, so this is a bit different for college students, how we should communicate, and it is a bit different for the IT company employees who are working in the IT employees from 2 3 years. So they demand some level of professionalism. But for college students, they demand some like casual है, cool है बंदा, इससे टेंट लेते हैं, अपने को सस्ते में देगा. So that's college attitude. But in professional attitude, they look for more safety. Is it good? अच्छे से मुझे वहां पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बीच में ही फट जाने चाहिए. So you are looking two different aspirations here. Okay. So in that way, how your user base is, you should always think about that, and you should develop a soft skill accordingly. Coming forward on this point of experience, Rahul, I want to ask कि कई बार आपको अपॉर्चुनिटीज सेंस करना भी पड़ता है कि, और ये कुछ फिक्स नहीं है कि आप वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या ना हो, बिकॉज यू सेंस दैट because you were fond of trekking, you sense that it is more beneficial to have it on rentals rather than actually purchasing it. Yes. And you sense that opportunity of business in that particular domain, Yes. irrespective of your engineering background. Yes. So Yes. how did you achieve it? ये सेंस करने का एटीट्यूड कहाँ से आया और कैसे आया? ये अभी प्रॉब्लम्स है ना, वो दिखते ही है. जो प्रॉब्लम्स ढूंढता है उसको प्रॉब्लम्स दिखते हैं. सो वन शुड ऑलवेज कीप देयर आइज ओपन, यू नो, कि कब कहाँ कैसा प्रॉब्लम मिल जाए और हम उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड constantly you should look, even if you are like from I will tell my story. According to my story, I was constantly looking for problems, but these problems came to me, you know, कि मैं खुद एक्सपीरियंस किया और मेरे दोस्त ने बोला कि हम लोग चालू करते हैं. सो दैट्स हाउ इट केम टू मी. तुम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो वो प्रॉब्लम पर्सनली, या और अभी वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है या फिर कोई और सॉल्व करता है इन द वे यू आर डूइंग, कि तुमने अभी विजुअलाइज किया कि यार अगर ऐसा होता ना, किसी ने ऐसा प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाया तो मैं पहले ले लेता, यू नो. तो ऐसा तुमको जब भी दिमाग में आए ना, जंप ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. तुम करो, किसी और के बाद तुम करो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. और इवन if you are not into startup, you are something, you are a student or you are a regular engineer who is seeking for job, or even you are a retired person, ये चीज बहुत ही मायने रखती है कि आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहो. You can always find someone to build your product, and you have the insight, you know. So skills, I think skills are important in the job, but skills are not important in the startup, as I feel. You should always look for the customer insight, what customer pain point is, and how really well you identify it, and how urgent is to be solved. Okay. And you take that problem and opportunity, and you find people who can solve that problem for you, you know. Books help me a lot also, you know, coming to that point also. So you can read biography of Elon Musk, biography of Jack Ma, and Richard Branson of Virgin Group, even the Peter Thiel's book 0 to 1, even $100 startup, lean startup. So these books will give you a really good perspective on how to look for problems or opportunities. And so best part about these books are, while you are reading them, you know, page by page, you get some ideas, you get the problems which you have seen earlier, you Yes. know. So reading is always good, you know. और ये तुम बता सकते हो क्या कि जो जिन बुक्स का, पॉडकास्ट का और इंटरव्यूज का तुमने जिक्र किया, तो क्या तुमने ऐसा कभी खुद को पाया कि अरे ये सिनेरियो मैंने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर सुना था, तो अब मुझे
इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो क्या उस Yes, सॉल्यूशन में yes, तुम्हें उनकी कुछ हेल्प मिली या फिर yes, तुम्हें yes. खुद से कुछ करना पड़ा? मेनी टाइम्स मेरा बहुत सारा जो हम बोल सकते हैं स्किल है इन बिजनेस और हाउ आई एम डूइंग business right now, it came from that. I am standing on the shoulder of these giants, you can say. So I would suggest ki whether you have started or you have already started or you are about to start, you should always read every day. I read every day, and you should always listen to this podcast, and you should always read many books, follow the blogs, follow the podcast like you guys are doing right now. So you will get the insight, and you will eventually found your problem while listening to this podcast or while reading that book. Okay, you will get यू many ideas. एटलीस्ट यू विल Yeah. स्टार्ट थिंकिंग कि अगर हमने कुछ ऐसा Yes, देखा yes. सुना या पढ़ा है तो हम भी हाँ, कुछ सोचने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस स्टार्ट हो yes, जाता है yes. कि हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। और कुछ वेस्ट नहीं जाने वाला है. You are reading एग्जैक्टली। right now and you are listening to podcast and you are going ahead. One day, someday you will start your business and you will utilize all the resources you have read so far, or the podcast you have heard so far. You will utilize the solution accordingly into your business also. At the conclusion, Rahul, would you like to share your mantra for our viewers, like how to think and how to behave, what to read? So mostly I have covered that, but I would like to say ki the way we are going and the way India is growing and other all other things considered, one should always look to solve the problems to start some venture rather than to go for the job or settle for something less than you deserve. You know, uh, I feel like many of my peers, many of my colleagues have the potential and have the abilities to start something on their own, irrespective of their financial background, irrespective of what field they are in, and anything. So one should continuously look for the opportunities. भाई क्या कर सकते हैं and take it really small कि अभी मेरा इतना स्किल सेट है, अभी मैं कुछ खुद से कर सकता हूँ क्या, if you have some skill set, utilize it. Anything, but start something on your own, gain some experience. True learning comes from when you do something on yourself. you know And I think so now वो is the correct learning, time for हाँ, gaining something because we have yes, enough yes. time on our hands. यस यस नॉट जस्ट फॉर मनी. वे पैसों की बात तो अभी की नहीं. मेरा खुद का रेवेन्यू भी इतना आता नहीं है, बट इन फ्यूचर इट विल इंक्रीज. दैट्स माय होप. आई नो दैट विल इंक्रीज. एंड सो लर्निंग जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो. यू लर्न मेनी थिंग्स like from documentation part to the legal part to the tax filing and all these things, how to behave customer, sales, technical, all the domains. You learn all the domains, even if you start a really small venture. you know Yes, so I will always suggest to start something on your own and be in it. yes. Rahul, I think we got lots of stuff today, lots of insights from your experiences, and I think our viewers will find it very, very useful. And thanks for being on board with us. It was really a great experience and great insight for us.